Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann integrations. We are discussing the properties of Riemann integrations, and in this lecture we are going to discuss the theorem 33.6, which is discussing the integrability of a function on an interval through its subintervals. तो हम किसी एक क्लोज इंटरवल पर फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी को डिस्कस करेंगे थ्रू दी property of being integrable on its subinterval. Okay, so let us start the lecture by writing the statement of theorem. So we are having theorem 33.6 and it says let f be a function defined on closed interval a comma b if we are having the c point from this closed interval which is not equal to a and b, and if is integrable on the closed interval a comma c and on closed interval c comma b. Then if is integrable on the closed interval a comma b, and in this case we can write the integration from a to b of f is same as integration from a to c of f and then integration from c to b of f. Okay, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी को चेक कर रहे हैं. What we are having, we know that function is integrable on this interval which is precisely a subinterval of a comma b, and the function f is integrable on this. तो अब इसमें दो टास्क हमारे लिए, एक तो हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन f इस क्लोज इंटरवल a कोमा b पर एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीग्रेबल है, यानी a टू b f पर ये हमारे पास ये जो भी इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर इंटीग्रल की वैल्यू हम इन दोनों इंटीग्रल को जब सम करेंगे तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी ये हमारे पास है, इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी ये है, क्योंकि हमें गिवन है एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा सी एंड एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा ए सी कोमा बी. तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को with the existence of these two integrals we will identify the first existence of this integral and then value of this integral. Okay, अब हमें पता ही है कि जब कोई इंटरवल किन्हीं सब इंटरवल में हम ब्रेक करते हैं तो हमें बाउंडेडनेस किस तरीके से मिल सकती है, क्योंकि फंक्शन f को इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए हम इसे पहले बाउंडेड शो करेंगे. ओके, क्योंकि f अगर इंटीग्रेबल है a टू c में तो यहाँ पर बाउंडेड है, और अगर c कोमा b पर इंटीग्रेबल है तो ये बाउंडेड है. अगर c कोमा b एंड a कोमा c इन दोनों सब इंटरवल पर बाउंडेड है तो इनकी यूनियन पर भी बाउंडेड होगा, और उनका यूनियन इज नथिंग बट दिस इंटरवल a कोमा b. तो हम सबसे पहले शो करेंगे कि f इस a कोमा b इंटरवल पर बाउंडेड है, and the moment we have the boundedness of the function f then we can talk about the इंटीग्रेबिलिटी. ओके, तो सबसे पहले फंक्शन हमारा बाउंडेड होना चाहिए, उसके बाद हम इसके इंटीग्रेबल होने के बारे में बात कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. प्रूफ में सबसे पहले हम शो करने वाले हैं दैट फंक्शन f इज बाउंडेड. ओके, सो फर्स्ट वी आर प्रूविंग दैट f is bounded function on the closed interval a comma b. Okay, since given that f is integrable on closed interval a comma c and closed interval c comma b, and hence bounded on a comma c and
C, B। अगर ये A, C और C, B पर बाउंडेड है, and therefore what we can conclude, therefore f is bounded on their union A, C union C, B, and that is nothing but A, B. Okay, so this function f is bounded on this closed interval. इसकी बाउंडेडनेस के बिना हम इसके लोअर सम और अपर सम को डिस्कस नहीं कर सकते, और लोअर सम और अपर सम को डिस्कस किए बिना हम यूएफ और एलएफ को डिस्कस नहीं कर सकते। अगर उनको डिस्कस नहीं कर सकते तो हम फंक्शन के इंटेग्रेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर सकते। तो बाउंडेडनेस हमारे लिए नेसेसरी है। ओके, नाउ वी आर कमिंग to identify whether f is integrable or not. Okay, so our second step to identify is integrable on closed interval a, b. Okay, अब हमें फंक्शन f की इंटीग्रेबिलिटी गिवन है इसके दोनों सब इंटरवल a, c और c, b पर। इन पर फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी को यूज करके वी विल प्रूव दैट फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल a, b। अब हमें ये पता है कि किसी भी सब इंटरवल या इंटरवल पर फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे कि अगर उसका uf इक्वल है lf के। हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं, ये पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है if for every epsilon there exists some partition p such that UFP minus LFP is less than epsilon। और तीसरी जो डेफिनेशन है that for every epsilon there exists some delta positive such that this is Cauchy criteria। Okay, whenever the mass of p is less than delta, then this will implies that UFP minus LFP is less than epsilon। These are three conditions to define the integrability। Okay, अब इनमें से हम किसी भी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, इवन सारी डेफिनेशन आपस में इक्विवेलेंट ही है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग इंटरवल से प्रिसाइज लेना, यहाँ ए से सी है, यहाँ सी से बी है, तो यहाँ पर तो हम कभी इंटरवल को नहीं बताते हैं ना। जैसे ये यूएफपी जब हम लिखते हैं, अपर सम लिखते हैं UFP, तो इस केस में हम कभी बात नहीं करते यहाँ पर कि कौन से इंटरवल पर है। हम ये बताते हैं कि फंक्शन है और एक पार्टीशन लिया हुआ है। बट यहाँ पर तो हमारे पास तीन तीन इंटरवल्स है, तो यहाँ पर कौन से इंटरवल के रिगार्डिंग हम अपर सम की बात कर रहे हैं, इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज द नोटेशन। जैसे अगर हमें इंटरवल A से B में बात करनी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, UABFP। ओके, तो यहाँ पर ये हमें बताएगा कि हम अपर सम की बात कर रहे हैं इंटरवल A, B पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा इंटरवल्स है, इसलिए वी आर टेकिंग दिस नोटेशन। ओके, सो लेट अस प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन। सो हम यूज करेंगे कि सब इंटरवल पर इंटीग्रेबल है। ओके, सो हम ये डेफिनेशन यूज करने वाले हैं, दिस वन। Okay, for every epsilon we are going to identify a partition P।